So how many inequalities are there? Y greater than equal to 0. That means y is equal to 0. Y less than equal to x square plus 1. Y is equal to x square plus 1. For less than greater than we will check which area we have to take. ठीक है? Y equal to 0 ले चुके हैं. Y is equal to x plus 1. X is equal to 0. X is equal to 2. There are 5 curves. So first of all we have to draw Cartesian plane. X, Y. Origin. Equation of x-axis. Y is equal to 0. ये ड्रॉ हो गया. ठीक है. Equation of y-axis. X is equal to 0 ड्रॉ हो गया. But here y greater than 0 and x greater than 0. That means whatever may be the shaded region, area must lie in first quadrant. In first quadrant x greater than 0, both x and y are greater than 0. यहाँ पर x less than 0, y greater than 0. Only first quadrant we have x and y both greater than 0. Now what is this? Parabola. Which parabola? Upward parabola, but not standard parabola. This is upward parabola. Definitely it will draw like this, but it will not pass through the origin. As you can put x0, you will not get y is 0. Okay. If it is upward parabola, then it will definitely intersect y-axis. Okay. If it will intersect y-axis, we can find out the point. At y-axis, x is 0. Put x0, y is equal to 1. When x is 0, y is 1. So, vertex of parabola is 0, 1. Parabola passes through 0, 1. And it is upward parabola. Okay? ये भी ड्रॉ हो गया. Y is equal to x plus 1. This is straight line. Now we will check whether this is straight line intersecting the parabola or not. Okay. Put the value of y in equation of line. Solving y is equal to x square plus 1 and y is equal to x plus 1. Y is equal to x square plus 1, put here. The parabola and this line intersecting at 2 points where x is 0 and 1. x0 is on y-axis. That means this line intersecting the parabola at here. At this line, everywhere the value of x is 0. ये लाइन पैराबोला को कहाँ काट रही होगी? यहीं काट सकती है. पैराबोला तो यहीं से पास हो रहा है. And other point is x is equal to 1. X is equal to 1 somewhere here. Okay. तो यहाँ तो काटेगी नहीं. पैराबोला तो यहाँ होगा. तो अगर इधर कोई भी आप लाइन खींचेंगे पैरेलल टू y एक्सिस, उस लाइन पर हर जगह x क्या होगा? 1 होगा. That means line is intersecting here and here. लाइन कैसे पास हो रही होगी? This is y is equal to x plus 1. Okay. Here we draw. X is equal to 2. This is 1, 0. 2 somewhere here. X is equal to 2 and this point 2, 0. Now in this question you can see that there are many bounded regions, 1, 2, 3, 4, but which one we have to calculate? For that you have to solve these inequalities. Okay? X greater than 0 and y greater than 0 implies the shaded region definitely lie in first quadrant. For parabola, first check which area we have to take.
inside or outside. Put 0 0 0 0. 0 is less than 0 plus 1. True or false? True. True. Origin, we are putting origin in equation of parabola and it says true. That means shaded area is lying outside the parabola, towards the origin. This side, area इस साइड होगा, पैराबोला के इस साइड होगा. क्लियर? 11th में शेडिंग करते थे तो शेडिंग इधर को करेंगे. ठीक है? पैराबोला की लाइन, in equation of line put x0 y0, y0 x0, 0 less than 0 plus 1. True. Again the shaded region of line is towards the origin. ठीक है? तो क्या ये एरिया shaded region हो सकता है? नहीं. लाइन की शेडिंग नीचे को हुई है और पैराबोला की भी नीचे को हुई, तो दोनों का कॉमन तो हो ही नहीं पाया. ये शेडेड रीजन सभी लाइंस का कॉमन एरिया होता था. तो यहाँ पैराबोला की शेडिंग भी नीचे हो रही है, लाइन की भी नीचे को हो रही है, तो ये एरिया में पैराबोला की शेडिंग तो आ ही नहीं रही. तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो छोटा सा बन रहा है, ये एरिया में नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है. ठीक है? सारी बातें ट्रू होनी चाहिए. अब y less than 2, this is the equation of line y equal to 2, y x is equal to 2, so we have to take x less than 2. If we are moving outside the origin, we will get x more than 2, greater than 2. तो एरिया किस साइड का होगा? इस तरफ का होगा. सारी बातें देखो ट्रू होनी चाहिए. पैराबोला के नीचे, लाइन के भी नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इस लाइन के इस साइड. तो हमारा स्टेट, हमें जो एरिया निकालना होगा वो ये वाला है. ये नहीं. ओके. रिक्वायर्ड एरिया दो पार्ट में करेंगे. 0 to 1. अगर 0 to 2 ले लोगे तो किसके नीचे? एक सिर्फ सिंपल लाइन के नीचे अगर आपने 0 to 2 करा तो ये निकल आएगा. ये हमें चाहिए नहीं. 0 to पैराबोला ले लिया तो ये जो फालतू का ये निकल आएगा. तो जो चाहिए वही निकालो. 0 to 1 पैराबोला के नीचे, तो फ्रॉम 0 to 1 अंडर द पैराबोला. पैराबोला y ऑफ पैराबोला x स्क्वायर प्लस 1. नाउ प्लस 1 to 2 y of line. Okay. X cube by 3 plus x x square by 2 plus x 1 to 2. Upper limit 1 by 3 plus 1 minus 0 plus 0. 2 2 1 by 2 plus 1 1 by 3 plus 1 4 by 3 0 plus 4 minus 3 by 2. Take LCM. LCM will be 6. 3 to the 6 8 24 2 3 6 9 32 minus 9 23 by 6 square units. Okay. फिर डायग्राम समझा रहे हैं. डायग्राम को समझा देते हैं.